वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिरैक डेल्टा फंक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हम एक डिरैक डेल्टा फंक्शन को डिफाइन कैसे कर सकें। नंबर टू, व्हाट आर द वेरियस रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि कौन सी वो तीन चार फंक्शंस हैं जो डिरैक डेल्टा फंक्शन को मैथमेटिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर थ्री, हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डिरैक डेल्टा फंक्शन। और आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे विद द एप्लीकेशंस ऑफ डिरैक डेल्टा फंक्शन इन फिजिक्स। सो लेट अस स्टार्ट। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, या ये सवाल हमारे जहन में भी आ सकता है कि हु इज द पर्सन जिसने कि डिरैक डेल्टा फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया। तो इट इज आंसर इज इट वाज पॉल डिरैक। ही रोट ए बुक, और किताब का नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ quantum mechanics, and this book was published in 1958। तो इसी किताब में पॉल डिरैक ने इस डिरैक डेल्टा फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी आ सकता है कि डिरैक डेल्टा फंक्शन में जो ये डिरैक है ये तो समझ में आ गया, इट वाज बिकॉज पॉल डिरैक इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट। व्हाई दिस डेल्टा? द आंसर इज कि इससे पहले एक फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, एंड दैट वाज द क्रॉनिकर डेल्टा फंक्शन डिनोटेड बाय डेल्टा आई जे। और इसका वैल्यू होता था जीरो इफ द इंडिसेस आई एंड जे आर नॉट इक्वल, और इसका वैल्यू है वन ओनली व्हेन द इंडिसेस आई एंड जे बोथ आर इक्वल। एंड ये जो क्रॉनिकर डेल्टा फंक्शन है, इट अप्लाइज टू डिस्क्रीट डेटा। तो बेसिकली जो डिरैक डेल्टा फंक्शन है, इट इज द continuous analog, it is the continuous analog of this Kronecker delta function, hence the name delta. Acha, what about a definition? Uh, we can think that Dirac delta function is a function on this real line. This is our real line axis। तो इसमें हर जगह डिरैक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू जीरो है। सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी एनी रियल नंबर, फॉर एग्जांपल एनीवेयर इन बिटवीन वन एंड टू। और यहां पर एक्स का कोई वैल्यू होगा, सपोजिंग दैट वैल्यू इज अल्फा। तो होता क्या है कि जो हमारी डिरैक डेल्टा फंक्शन है, इट्स वैल्यू इज जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट। अच्छा, यहां पे क्या है? हियर द डिरैक डेल्टा फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, its value goes up to infinity. So Dirac delta function is a function whose value is zero everywhere except at a particular point। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिरैक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू है, दैट इज इंफिनिटी, दैट इज। तो हम डिरैक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन ये लिखेंगे दैट डेल्टा ऑफ एक्स माइनस अल्फा, its value is zero if x not equal to alpha, and its value is infinity only at one point where x is exactly equal to alpha। The definition is not complete yet। दूसरी चीज इसके बारे में, डिरैक डेल्टा फंक्शन के लिए अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ देखें,
यानी कि वी विल इंटीग्रेट दिस डिरैक डेल्टा फंक्शन over all the values of x starting from minus infinity to plus infinity, the value is 1. यानी जो इसकी विड्थ है, विड्थ, और जो इसकी हाइट है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट द वैल्यू 1, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. और कोई भी फंक्शन हो which will have these two properties. Number one, that its value is zero everywhere except its value is infinity at a particular point, x is equal to alpha. And number two, its area under the graph over all the values of x should be equal to 1. तो ये दोनों प्रॉपर्टी जिस भी फंक्शन में हो, तो that can be termed and that can be accepted as Dirac Delta function. How we can visualize this Dirac Delta function? Let this be origin of the coordinates. So here x has value 0. Let us go 2 units to the right. So here x has got value 2. इसी तरह हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी 2 यूनिट्स जाएंगे. सो हियर एक्स हैज गॉट वैल्यू -2. तो यहां पे हम देखते हैं कि the total width is 4 units. So width is 4 units. और हम एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी हाइट, this is the height, and this height is equal to 0.25 units. So what is area of the rectangle? It is length into breadth, or we can say height into width. So 0.25 into 4 is equal to 1. Next हम क्या करेंगे? We will decrease width. We will make width half. 2 यूनिट्स की जगह हम एक ही यूनिट तक जाएंगे ऑन द इधर साइड. राइट साइड में भी हम यहां तक जाएंगे 1 यूनिट, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हम सिर्फ 1 यूनिट पे जाएंगे. सो वी हैव डिक्रीज्ड विड्थ, वी हैव मेड विड्थ हाफ. व्हाट अबाउट हाइट? हाइट को हम डबल करेंगे. सो नाउ वी विल डिक्रीज विड्थ, हम विड्थ को हाफ करेंगे. तो हम ओरिजिन से 1 यूनिट जाएंगे राइट हैंड साइड. सो हियर x इज इक्वल टू 1, और हम ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड भी जाएंगे 1 यूनिट. सो हियर x हैज गॉट वैल्यू -1. सो द विड्थ हियर इज नाउ 2 यूनिट्स. 2 यूनिट्स. अच्छा, हाइट को हमने क्या करना है? इनिशियली हाइट वाज 0.25. now we have to double that, so the height will be equal to 0.5. so this is the height. Now let us see what is area of this new rectangle. The height is 0.5 units, the width is 2 units, the area is again equal to unity. तो इसी तरह हम विड्थ जो है उसको डिक्रीज करते जाएंगे. विड्थ विल बी डिक्रीज्ड, और जो हाइट है, हाइट विल बी इंक्रीज्ड, एंड इन द लिमिट व्हेन विड्थ विल टेंड टू 0, द हाइट विल टेंड टू इन्फिनिटी. तो उस टाइम जो हमें ओरिजिन के अराउंड एक स्पाइक मिलेगी, नैरो एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग. तो दैट इज द डिरैक डेल्टा फंक्शन. इनफैक्ट डिरैक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन में हमें
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाने की जरूरत नहीं है। जो स्पेशल पॉइंट अल्फा है, जहां पे हमारे डिरैक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी है और बाकी सारे वैल्यूज ऑफ एक्स पे जीरो है, तो हमने दो रियल नंबर्स चूज करने हैं, ए और बी, सच दैट कि ए शुड बी a little less than alpha and b should be a little greater than alpha. So we can write, now we don't have to go from minus infinity to plus infinity, बल्कि हम x is equal to a से x is equal to b तक जाएंगे, and delta of x minus alpha dx, this will be again 1, because इसकी वजह या इसका रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि जो हमारी ये डिरैक डेल्टा फंक्शन है, इट हैज गॉट वैल्यू ओनली एट दिस पॉइंट, और बाकी जितने भी वैल्यूज ऑफ एक्स है वहां पे तो हमें इस इंटीग्रेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलने वाला। एज अ पर्टिकुलर केस, अगर हम अल्फा को चूज करें इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है, वी आर चूजिंग ओरिजिन टू बी दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी, डेल्टा ऑफ एक्स माइनस अल्फा था, दैट इज जीरो, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू जीरो है इफ एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा, विच इज दिस टाइम जीरो, और इसका वैल्यू इनफिनिटी है व्हेन x इज इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा इज जीरो दिस टाइम। और जो इसकी नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी है, दैट विल बिकम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ x dx इज इक्वल टू 1। x इसके डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल अगर लेंथ के हैं, the overall integral gives us a scalar, a value जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, so that means जो Dirac delta function है, it should have the dimensions of inverse of length. Now not necessarily कि x के डायमेंशन लेंथ के होंगे, तो इसको अगर हम जनरलाइज करेंगे कि अगर x के डायमेंशंस किसी फिजिकल क्वांटिटी के हैं, तो delta of x will have dimensions of inverse of that quantity. Dirac delta function usual sense में कोई function नहीं है. We can think of Dirac delta function as some filter or selector. इस ग्राफ में ब्लू कलर से एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो इट हैज गॉट कंटिन्यूअस वैल्यूज ओवर वैल्यूज ऑफ एक्स, और इसी डायग्राम में हमने डिराक डेल्टा फंक्शन बी प्लॉट की है, which has value infinity only at x is equal to alpha. अच्छा, at x is equal to alpha, our function will have value f of alpha. तो डिराक डेल्टा फंक्शन, इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, इट इज सम सॉर्ट ऑफ विंडो, कि इस विंडो के अंदर इस फंक्शन का जो भी वैल्यू फिट होगा, ये हमें वही वैल्यू रिटर्न में देगी. दिस फंक्शन हैज lot of values. We have got very large values of f of x, continuous. लेकिन अगर इसमें हम डिराक डेल्टा फंक्शन अप्लाई करें, तो इट विल रिटर्न अस a particular value of function, and that is f of alpha. Now let us check few functions which can represent Dirac delta function mathematically as well as graphically. तो इसमें सबसे पहला नाम आता है ब्लॉक फंक्शन.
जिसको हम डिफाइन करते हैं 1/epsilon, and the condition is this epsilon should tend to 0. एपिसलॉन का वैल्यू एज स्मॉल एज पॉसिबल होना चाहिए, और डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एपिसलॉन टेंड्स टू 0 1/epsilon फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स ranging from -epsilon/2 to +epsilon/2, और इस डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 होगा फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ एक्स which are less than -epsilon/2 and greater than epsilon/2. जब हम इस फंक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें ये मिलता है, जो विड्थ है दैट इज epsilon/2, बिकॉज हम ऑरिजिन से टू द राइट भी जाते हैं epsilon/2, सो हियर x has value plus epsilon/2, और हम इतनी ही डिस्टेंस टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑरिजिन जाएंगे तो हियर x has value minus epsilon/2, और जो इसकी हाइट है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1/epsilon. सो अगर हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल देखें या एरिया अंडर द ग्राफ देखें, द हाइट इज 1/epsilon into the width is epsilon, so the value is unity. That is the normalization property. So block function can represent Dirac delta function. एक और फंक्शन है सिंक फंक्शन, इसको हम डिफाइन करते हैं साइन ऑफ एक्स पे एपिसलॉन, एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय पाई एक्स, लेकिन इस पे हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि ये जो एपिसलॉन है दिस शुड टेंड टू 0. जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि व्हेन एपिसलॉन इज 1, तो ये डिरैक डेल्टा फंक्शन को उतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम एपिसलॉन को डिक्रीज करके 0.5 बना दें तो इट टेंड्स टूवर्ड्स डिरैक डेल्टा फंक्शन, और जब हम एपिसलॉन को और छोटा करते हैं व्हेन वी मेक इट मोर क्लोज टू 0 यानी 0.3, तो हमें ये स्पाइक देखने को मिलती है. सो दैट मीन्स कि जितना एपिसलॉन टेंड करेगा टूवर्ड्स 0, ये जो फंक्शन है इट विल बी मोर एंड मोर लुकिंग लाइक द डिरैक डेल्टा फंक्शन. So sync function can also represent Dirac delta function. एक और फंक्शन है Lorentz Cauchy function, which is 1/pi epsilon by x square plus epsilon square, और इसके साथ कंडीशन है कि this epsilon should tend to 0. इसका भी ग्राफ देख लें तो इसमें भी हम देखते हैं कि जितना जितना एपिसलॉन का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है, जितना एपिसलॉन का वैल्यू 10 to 0 करता है, 1.2 देन 0.6 देन 0.3, तो उतना उतना जो इस ग्राफ इस फंक्शन का ग्राफ है इट इज लुकिंग लाइक मोर लाइक द डिरैक डेल्टा फंक्शन. एक और फंक्शन जो डिरैक डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकती है इज द गॉसियन फंक्शन विद द डेफिनेशन लिमिट एपिसलॉन टेंड्स टू 0 1/2 रूट पाई एपिसलॉन into exponential function of -x² by 4 epsilon. Let us check its graph. तो इसमें हम देखते हैं कि जूं जूं एपिसलॉन का वैल्यू टेंड करता है टुवर्ड्स 0, तो उतना उतना इस ग्राफ का इस फंक्शन का जो ग्राफ है दैट टेंड्स टुवर्ड्स डिरैक डेल्टा. नाउ लेट अस see few properties of Dirac delta function, and we shall also prove them. Number one property is that Dirac delta function is an even function, और इस प्रॉपर्टी को हम सिमेट्री प्रॉपर्टी भी कहते हैं. दैट इज डेल्टा ऑफ x minus a equals delta of a minus x. X is the variable and a is that
पर्टिकुलर और स्पेशल पॉइंट। और अगर हम ओरिजिन को वो स्पेशल पॉइंट लें, देन ए इज इक्वल टू 0, देन दिस प्रॉपर्टी, इसमें दोनों जगह हम वी विल पुट ए इज इक्वल टू 0, तो वी विल गेट डेल्टा ऑफ x इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ माइनस एक्स। लेट्स प्रूव इट। हमारी डिरैक डेल्टा फंक्शन है डेल्टा ऑफ x minus a. It has got value infinity only at a particular value of x, that is x is equal to a. अगर हम डिराक डेल्टा फंक्शन ऐसे लिखें दैट डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ a minus x, that means delta of negative of x minus a. वेल इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी डिराक डेल्टा फंक्शन है, इट हैज गॉट वैल्यू इन्फिनिटी ओनली एट a इज इक्वल टू x, या हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू a। तो दैट मीन्स कि डिराक डेल्टा फंक्शन x माइनस a एंड डिराक डेल्टा फंक्शन a माइनस x both convey same meaning, hence they are equal or equivalent. So that means we can write that delta of x minus a is equal to delta of a minus x. As a special case, if we choose that particular point a to be origin, so a is equal to 0, then that gives us delta of x, क्योंकि यहां पर a का वैल्यू 0 होगा, इज इक्वल टू, सिमिलरली यहां पर भी a को हम पुट करेंगे इक्वल टू 0, तो वी विल गेट डेल्टा ऑफ माइनस एक्स, हेंस प्रूव्ड। दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f of x delta of x minus a dx is equal to f of a. Actually this is our function और इस पे ऑपरेट होता है ये डिराक डेल्टा फंक्शन, एंड वी नो that Dirac delta function has got value only at x is equal to a. बाकी जो भी डोमेन ऑफ एक्स है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स our Dirac delta function is 0. तो एक्चुअली जो f of x के बहुत सारे वैल्यूज हैं ओवर द डोमेन ऑफ x, उसमें से it picks out or chooses out a single value of this function, and that is equal to f of a. Hence we get it equal to f of a. Now let's prove it. चूंकि ये डिराक डेल्टा फंक्शन जो है, इट हैज गॉट वैल्यू ओनली एट x इज इक्वल टू a, तो ये जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, तो इसको हम शॉर्टन करेंगे। वी विल चूज ए रियल नंबर एपिसिलॉन टेंडिंग टू 0, so that जो x है, its value will range from a minus epsilon to a plus epsilon. तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हम चेंज करेंगे, हम माइनस इन्फिनिटी की जगह लिखेंगे a माइनस एपिसिलॉन, और प्लस इन्फिनिटी की जगह हम लिखेंगे a प्लस एपिसिलॉन। बिकॉज जब हम ये इंटीग्रल सॉल्व आउट करेंगे, तो डिराक डेल्टा फंक्शन जो है, इट इज वैल्यू इज अप्रिशिएबल ओनली एट x इज इक्वल टू a। तो हम a से थोड़ा राइट पे जाएंगे और हम a से थोड़ा लेफ्ट में जाएंगे, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। सो आवर इंटीग्रल विल बी इक्वल टू a minus epsilon to a
plus epsilon f of x Dirac delta function x minus a dx. अब चूंकि हमारे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दे आर फ्रॉम a minus epsilon to a plus epsilon, and this interval is extremely small because we have chosen that this epsilon tends to 0. So we can approximate our function f of x to be constant over this interval and will be equal to f of a, because the limits are from a minus epsilon to a plus epsilon, and this epsilon is tending to 0. So our integral will become, chunki f of x becomes f of a, that's a constant, we can take that out of the integrand. So it is f of a integral a minus epsilon to a plus epsilon Dirac delta function of x minus a into dx. Now using normalization property, this integral equals 1. Hence, we get f of a. That is the shifting property. Next comes the scaling property, that delta of ax, a is some real number, constant, equals 1 by mod a into Dirac delta function of x. We will use this inside an integral. So integration from minus infinity to plus infinity delta of ax dx is equal to, हम इस infinity की जगह l लिखेंगे, तो the integration is from minus l to plus l Dirac delta function of ax dx. और चूंकि यहाँ पे लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक थे, तो we will take the limit that this L tends to infinity. Next, we will make a substitution. So we will make a substitution. The substitution is that we will put this a times x is equal to some variable y. तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर लें, a is a constant, so a into dx is equal to dy. तो यहां से हमें डिफरेंशियल x dx के लिए एक्सप्रेशन क्या मिलेगी? This a will come here and it will divide dy. So we will get 1 by a times dy. So we are done with this. dx हमें मिल गया. Next, we have to look for those limits. So when x tends to plus L, that means y will tend to, when this x tends to plus L, y will tend to plus AL. And when x will tend to minus L, the new variable y will tend to minus AL. तो let us use those values. एक के dx की जगह हमने लिखना है 1 by a dy, और जो लिमिट्स हैं उनकी जगह अब हमने लिखना है कि we are going for integration from minus AL to plus L. So our integral, which is minus infinity to plus infinity delta of ax dx will become limit L tends to infinity integral minus a times L to plus a times L delta of
ए एक्स था तो वहां पे हम लिखेंगे डेल्टा ऑफ वाई, और उसके बाद डी एक्स था तो उसकी जगह हम लिखेंगे 1/a टाइम्स डी वाई. This a is a constant, so it will get out of the integrand. So our integral will become 1/a, then limit L tends to infinity, integral minus AL to plus AL, Dirac delta function y into dy is equal to 1/a. Acha, when limit L tends to infinity, this AL means it is tending to infinity plus. And this minus AL means it is tending to minus infinity. So our integral will become minus infinity to plus infinity delta of y dy. चूंकि ये वेरिएबल्स x और y आर्बिट्रेरी है, चाहे हम इसके अंदर वेरिएबल x यूज करें या y यूज करें, we will get the same result. So we can write this integral in terms of x. We will write this in terms of x. So our integral, which is minus infinity to plus infinity delta of ax dx, becomes 1/a, and then we had got an integral in terms of variable y. We can write that in terms of x. So delta of x dx, and the limits are minus infinity to plus infinity. Now two cases arise. If a is greater than 0, then we have got this thing very much same. But if a is less than 0, then our integral becomes minus 1/a minus infinity to plus infinity delta of x dx. तो दोनों को कंबाइन करके हम एक ही एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो a है इसका प्लस और माइनस साइन दोनों को इंक्लूड करने के लिए वी विल यूज मॉड a and then integral minus infinity to plus infinity delta of x dx. तो यहां से हमें पता चलता है, दोनों साइड्स में ध्यान देके, कि डेल्टा ऑफ ए एक्स इक्वल्स 1/mod a delta of x. Hence proved. Let us do a problem. इसका हमें वैल्यू निकालना है. Now since हमारे जो फंक्शन है that is exponential function e raised to power -5t, and it is operated by this Dirac delta function. Now the limits of integration are from minus infinity to plus infinity, but we know that this Dirac delta function has got value appreciable only when this t is equal to 2. या यहां पर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं दैट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी वी हैव गॉट a function f of x, then Dirac delta function x minus a dx. Now this is equal to f of a, the shifting property. तो इसका मतलब है कि जो गिवन इंटीग्रल है we will write it simply f of चूंकि यहाँ पे t is equal to 2, तो that means we will write it as f of 2, and our function is exponential function, so we will write it as minus exponential function of -5t, where
we have to put this t is equal to 2. So we will get e raised to power minus 5 into, we have to give value to t is equal to 2. So this is equal to e raised to power minus 10. Laplace transform. तो let us see, अगर हम डिराक डेल्टा फंक्शन का Laplace transform निकालें तो हमें क्या मिलेगा? The Laplace transform of Dirac delta function x minus a is equal to integral 0 to infinity e raised to power minus sx and then the function जिसका हमने Laplace transform निकालना है, Dirac delta function x minus a dx. Using shifting property, इस फंक्शन का वैल्यू होगा e raised to power minus sx, but with the condition कि जो x का वैल्यू है that should be equal to a. तो x should be equal to a, तो that means e raised to power minus s a. And as a special case, if the Dirac delta function is defined at the origin, so a is equal to 0, so Laplace transform of delta of x will be equal to e raised to power minus s into, यहां पर जो ये a है उसकी जगह हम 0, तो this is e raised to power 0 is equal to 1. Fourier transform. तो Fourier transform of Fourier transform. तो Fourier transform of Dirac delta function will be given by 1 by 2 pi. The limits of integration are from minus infinity to plus infinity e raised to power minus iota sx and then the function जिसका हमने Fourier transform निकालना है, delta of x minus a dx. So using shifting property, we will get 1 by 2 pi or function e raised to power minus sx, but with a condition that x equals a. So we will get 1 by 2 pi e raised to power minus s into a. Special case, we will look for the special case that this Dirac delta function is defined at origin. So Fourier transform of delta of x will be given by 1 by 2 pi and यहाँ पर a जो है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 0, so it will be e raised to power minus s into 0, 1 by 2 pi e raised to power 0, which is equal to 1. So the Fourier transform equals 1 by 2 pi. Heaviside function, which is the step function, जिसको हम थीटा ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं. तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर लें with respect to x, तो we get Dirac delta function. So Dirac delta function is, we can say, the gradient or the first differential coefficient of Heaviside function. Now let us see what are the applications of Dirac delta function in physics. So Dirac delta function models density of a point source, and this density can be mass density, it can be charge density or any other density. तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है, तो it can have mass say m, it can have charge say q. तो अगर हमने मास डेंसिटी ही निकालनी है, सो मास डेंसिटी will be equal to mass divided by volume,
तो will be equal to m by 4/3 pi r cube. तो यहां से हमें पता चलता है दैट द मास डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंस कितनी है. But what about the density at the particle itself, at the point object itself, where r tends to 0, this rho m tends to infinity. Then this mass density can be represented by Dirac delta function. Similarly, the charge density can also be represented by this Dirac delta function.